Swati Joshi, there's an ugly political war of words which is currently underway. Some in the opposition are already distributing certificates of innocence to those who've been arrested and casting an aspersion of doubt on the investigation which is underway. Why is the probe being politicized? That's the question we are asking. We'll also do a deep dive into the multiple developments that have taken place so far in the investigation that is underway. Let's first talk about the political storm that has erupted after Delhi blast near Red Fort. The opposition has launched a scathing attack on Prime Minister Narendra Modi and Home Minister over what they are calling a major intelligence and security failure. Several opposition leaders have questioned the government's handling of national security, alleging an intelligence lapse that led to the explosion in the heart of the national capital. Congress has demanded Home Minister Amit Shah's resignation, and the Congress party is accusing the government of failing to protect the citizens. The TMC too has joined the attack, saying Prime Minister's Bhutan trip should have waited, while CPI has stated that the Prime Minister should have been in Delhi amid the crisis. Let's first listen into those reactions. Our Honorable Home Minister claimed that there is no this type of terror attack is happening in India. At that point of time itself, we told that don't take it as a light thing. Safety and security are utmost importance of this country. Basically, it is a clear security failure. National capital it is happening means it is a clear security failure. What is the moral responsibility of the Home Minister? The Home Minister goes to Bihar and other places and openly says that Bangladeshis are coming in. Openly says terrorism is on the rise. Then what is he doing? In any other state, he would have been thrown out of the cabinet in any other country. But he is indispensable because he shares all the secrets of Mr. Modi. I mean, why is he not being held accountable? Why is the Home Minister of India not being held accountable? Is he there only to dislodge state governments? Is he there only to do politics? If he is going to do only that, let him let him get back to his party fold. It is absolutely appalling and very shocking that, as I said, is this the new normal? That this is something which the Indians should accept? No, he can go to Bhutan for a very important work. How can anything be more important than death? How can anything be more important than a terrorist attack within India, in the capital? We don't understand. So he should have been. Seeking accountability and answers from the government on national security is not wrong. But why is there politics happening on this issue? Why are motives being assigned? Both Samajwadi Party and the Congress have launched sharp attacks on the government. Both these parties have alleged that the centre is punishing innocents in the name of justice while concealing its own failures in preventing the attack. Listen in. जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर, 19 साल तक जेल में रहे वो लोग, फांसी के कोठरी में डाल दिया उनको, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं, इनको जबरदस्ती पकड़कर इनको जो है इतने साल जेल में रखा गया। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बदसुरी नाइंसाफी है और जो है ये इनकी नाकामयाबी है, असफलता है डिपार्टमेंट की जो इस तरह करते हैं, और बहुत सही तरीके से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और इसको सजा मिलना चाहिए। Well, there are rebuttals coming in from the Bharatiya Janata Party as well. Union Minister Giriraj Singh has hit out at the opposition for their criticism of the Prime Minister and the Home Minister. Giriraj Singh alleges that the opposition leaders have been abusing the Indian Army and are speaking in Pakistan's language, raising serious questions about their stance on national security. जो कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर सकता है, पाकिस्तान की तारीफ कर सकता है, राहुल गांधी जरा आप से मैं निवेदन करूंगा, आपके एडिटर से भी, कि वो पहलगांव का ये तो तफरी करने गया था, अभी भी देखिए ना कहां घूम रहा। ये विपक्ष को तो डूब के मर जाना चाहिए। लगता ही नहीं है कि देश का विपक्ष है, ये लगता है जो हमारा दुश्मन देश है वहां का विपक्ष है।
Let's open this up. We're joined by Jasmine Sandavalia, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. We have Dr. Nikul Patel, leader Congress, and Akhilesh Katiyar, national spokesperson of the Samajwadi Party. Katiyar जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी. अबू आजमी अभी से इनोसेंट होने का सर्टिफिकेट बांटने लगे. लेट द इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड. ये कोई रातों रात मॉड्यूल तैयार हुआ और रातों रात ये चीज हुई है, ऐसा नहीं है. जब पहले जम्मू कश्मीर में जेईएम के पोस्टर्स सामने आए, वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, वहां से फरीदाबाद के मॉड्यूल तक पहुंचे. तो ये किस बेसिस पर कह रहे हैं अबू आजमी कि जो लोग निर्दोष है उनको उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है? अबू आजमी साहब ने स्वाति जी जो बात जहां से कही कि मुंबई के अंदर ऐसा हुआ, और हम एक बात कहते हो, अबू आजमी साहब का बयान है. देश में गृह मंत्री साहब जो हमारे अमित शाह साहब हैं, इसमें पूरा देश इस बात पे सहमत है कि अब आप इस्तीफा दे दें, आपके बस का गृह मंत्रालय चलाना नहीं है. इंटेलिजेंस का कोई काम ही नहीं रह गया है. आपका काम तो क्या बचा है क्या नहीं बचा है, चाहे पहलगांव में हो चाहे पुलवामा में हो, कहीं पे कुछ किसी को हम बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं. लेकिन अपराधी कितने को सजा देते हो भैया? इंटेलिजेंस क्या करती है? अपनी ब्लास्ट हो जाता है, पता नहीं चलता है. बाहर से घुसपैठी आ जाती है, आपको पता नहीं चलता है. 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेके लोग घूम रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है. आतंकवादी आते हैं, गोली मारते चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है. क्या कर रहे हैं भाई? कटियार जी, वो फरीदाबाद का मॉड्यूल बस्ट हुआ, तभी तो पता चला कि इतना सारा एक्सप्लोजिव ये लोग जमा किए हुए थे. एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां हुई, तभी तो पता चला कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स इस टेरर मॉड्यूल में शामिल हैं. और आप सवाल पूछिए, आप जवाब मांगिए सरकार से, लेकिन किस आधार पर पहले से ही सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है कि जो निर्दोष है उनको पकड़ा जा रहा है? मेरा सवाल ये है. मैं ये पूछ रहा हूं कि बॉर्डर किसके हवाले है? गृह मंत्रालय ही बॉर्डर देखता है ना. तो ये देश के अंदर कहां से आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी स्वाति जी कौन लेगा? हर बात पे हम पाकिस्तान, हर बात पे हिंदू मुसलमान, इन सब मुद्दों पे बात टाल के क्या जिम्मेदारी? नहीं, हिंदू मुसलमान, लेकिन हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अखिलेश कटियार जी, मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए. हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. मैं तो आपसे ये एक बार सुनिए, तो सुनिए. हमेशा होता है, जरा कुछ हुआ तो मुसलमानों को पकड़ने का, अंदर डालने का, कुछ किसको भी, बेगुनाह लोगों को भी अंदर डालने का. मैं इसकी जिम्मेदारी हमारे खुफिया एजेंसीज को नहीं दूंगा, बल्कि सरकार को दूंगा. Dr. Nikul Patel, like I said, nothing wrong in seeking accountability and answers from the government on national security. But on what basis are these statements being made? कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है. रिलीजन का एंगल कौन ला रहा है? अब हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? Shouldn't netas be more responsible while making statements? See, whatever incident had happened is not correct, and the people who were claiming to be chowkidar of the country have failed in their actions. That is clearly reflecting from what the incident happened in the Delhi. And definitely as an opposition, we have due right to ask every question regarding their responsibility to the country, as well as the, we can say, the intelligence failure, security of the people of the country. And that's nothing wrong in. But people who are putting the words of religion, definitely they has to curtail, and they don't have to speak like this. The people who are doing all these things are culprit, and they are social anti-nationals, and they should be punished whatsoever the religion they are from. And the government agencies must carry out the investigation, reach to the deep root of this cause, and find out and punish all them. Nobody should be allowed to do such So you're activities. saying the statements that are being made by Congress leaders and Samajwadi Party leaders are wrong? That at this point of time, political parties should not politicize the issue by jumping to conclusions that innocent individuals are being picked up? I would say that the government must be also held responsible for everything happened in the country. Absolutely. It's their responsibility. You should ask tough questions. But why inject the religion angle, and why arrive at this conclusions कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? That I've already answered to your question. Okay, let me bring in Jasmine Sandavalia. Jasmine Sandavalia, Samajwadi Party says the government should answer. Well, the government is already answering, and I want to bring it to the both the gentlemen who prior to me have spoken. I only want to quote one incident, one historical fact, and that is from 2004 to 2014 to 7,217 terror incidents
incidents took place in India. While when the BJP-led government has come to power, only 2,242 incidents have taken place. We have curtailed down the terror incidents. Here I can go on from Bombay to the Parliament attack to everywhere. We are not shying away from our responsibility. It is the responsibility of the government. It is the responsibility, and a very proactive Home Minister was the first person who went there, spent the entire night there. But the opposition is demanding the Home Minister's resignation. Jasmine Sandhawalia, while you're putting out this data, comparing terror incidents that happened during the UPA's era and now, the opposition says that the government has failed in its promise of national security. No, the government has not failed. Sadly, we have very, very hostile neighbors, and terror attacks have always taken place in the last 72 years since our democracy. We can't deny that. But unfortunately, the opposition is trying to politicize the issue. They need to ask us tough questions. They have every right to ask that. But please do not make this issue a frivolous issue. Okay. Don't start saying, oh, this hasn't happened and the Home Minister needs to resign. We have one of the most proactive Home Ministers since the country. Akhilesh Katiyar wants to come in. Akhilesh Katiyar does not agree with you. He has every right not to agree, but Akhilesh Katiyar, go ahead. Okay, allow him to speak. Akhilesh Katiyar. 7,000 terror attacks happened during their regime. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता को हक है ना। पहलगांव में आपने कितने लोगों को सजा दी, कितने अपराधी पकड़े, पुलवामा में क्या हुआ, कितना आरडीएक्स कैसे आया। इस देश में कुछ भी चलता रहेगा और जनता आपसे सवाल करती तो आप डेटा दे रहे हैं कि यूपीए में ये हुआ था, हमने ये हुआ। अरे यहाँ इतने सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जाने जा रही है, उनके साथ संवेदनाएं हैं हमारी। हम बहुत आहत है कि इस तरीके की घटना हमारे देश की छाती पे घटती है, दिल्ली की देश की राजधानी में होती है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरे पे डालने के बजाय आप पहलगांव घटना कितने दिन हो गए, कितने लोगों को हमने सजा दी है। पुलवामा के अंदर जो हुआ, क्या हुआ, हमने कितने लोगों को, ये कहने से कि हम बख्शेंगे नहीं, उनको जवाब देना पड़ेगा, ये बातें हैं। जब ये कहा गया कि हम बख्शेंगे नहीं, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, वो क्या था? वो जवाब नहीं था। स्वाति जी तो अभी कल वो कहीं में स्टेटमेंट हो रहा था, तो अभी भी चल रहा है, वो तो अभी भी चल रहा है और आगे दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। ये है सरकार की इंटेलिजेंस, ये है सरकार की क्षमता, ये है गृह मंत्री के काम करने का तरीका। इसीलिए पूरा अपोजिशन चाहता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जैस्मिन संधावालिया, I think, unfortunately for our country, the opposition is not playing a very, very productive and a mature attitude towards the democracy of this country. They are failing to understand that during their regime, what was happening, the BJP-led government in the last 11 years has curtailed terror attacks to a great extreme. Only 2,212 incidents have taken place. While in the first 6 years of Congress-led government, more than 3,000 attacks happened in India. What were they doing then? It is, I am not. Okay, but there should be no whataboutery. There should be no whataboutery, and certainly not politics. Certainly not politics, Dr. Patel. The netas need to speak responsibly before saying कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है or that innocent individuals are being picked up. Allow the agencies to do their job. Let them finish the investigation. See, firstly, definitely the agencies need to carry out their investigation, but the jumlas that Bharatiya Janata Party had provided to the country, are they accepting that they have given that there will be a national security of all the people and no one will be harmed? So that is the failure, first thing. Secondly, they are saying about Operation Sindoor, what you rightly said, that it is still on. And if such incident is happening and it is found that the lines are going up to Pakistan, whether they will initiate that Operation Sindoor or not. I would like to ask my Bharatiya Janata Party counterpart. Dr. Patel, like I said, allow the investigation to take place first. Allow them to reach a logical conclusion. क्योंकि पहले आप ही कहेंगे कि देखो they have started blaming Pakistan. क्योंकि पहले आप ही कहेंगे देखो they have started blaming Pakistan. To start Operation Sindoor again. If the investigation leads to Pakistan, let the investigation happen. There are so many ifs and buts, Dr. Patel. That's what I'm saying. There are so many ifs and buts. कोई कह रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कोई कह रहा है innocent individuals are being targeted. There are others like महबूबा मुफ्ती हुआ saying कि मुजरिमों की तरह प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए.
Mr. Katiyar, my question is, allow the investigation to happen. ये तू मैं और पॉलिटिक्स बाद में भी हो सकती है. ठीक है, मैं इससे स्वाति जी पूरी तरह सहमत हूं. राजनीति अलग है, लेकिन देश की आम आवाम ये जरूर समझना चाहती है कि हमारी गवर्नेंस एक सुरक्षित हाथों में है. वो मजबूत लोग हैं, देश के आवाम के साथ खड़े हैं. इस देश में 3-4 घटनाएं आपको, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगांव हो, चाहे दिल्ली का ब्लास्ट हो, हमने कितने लोगों को सबक सिखाया. और इस देश के अंदर कोई चला आता है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, यहाँ एक पत्ता नहीं आना चाहिए. लेकिन अखिलेश कटियार, मैं जानती हूँ कि आप भी जो इन्वेस्टिगेशन की जानकारी सामने आ रही है उसको पढ़ रहे होंगे कि कैसे 2900 किलो के एक्सप्लोजिव मटेरियल को जब्त किया गया, हथियार जब्त हुए, क्योंकि सबसे पहले जेएम के पोस्टर जम्मू कश्मीर में दिखाई दिए. वहां से पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पूरा मॉड्यूल बस्ट होता है, लोग गिरफ्तार होते हैं. और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये जो व्यक्ति भाग गया था उमर, वो प्लान्ड अटैक नहीं था. इट वॉज इन हेस्ट. वो जो आईडी था, इट वॉज नॉट असेंबल्ड प्रॉपरली. ये प्लान्ड अटैक नहीं था. कई लोगों का भी मानना है कि इसी की वजह से जो इंपैक्ट था वो लिमिट हो गया, इससे बहुत बड़ा हो सकता था. डू यू अग्री विद दैट एनालिसिस, अखिलेश कटियार? मैं बिल्कुल सहमत हूं. और आपको इस बारे में भी स्वाति जी, आपको जरूर जानकारी होगी कि कई खबरें आ रही हैं कि 6 महीने से है, कोई कहता है 1 साल से दिल्ली टारगेट पे है, निशाना बना कर रखा है. यहाँ पे इस तरीके का इंटेलिजेंस को अलर्ट रहना चाहिए था कि इस तरीके की छोटी घटनाओं को भी रोका जा सकता था. हम मानते हैं सरकार काम कर रही है, लेकिन इस तरीके के जब ये इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरीके का दिल्ली को टारगेट किया जा रहा है, तो इंटेलिजेंस कैसे फिर क्या करती है? सर, तभी तो आप कह रहे हैं कि आप मुझसे अग्री भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार काम भी कर रही है, फिर आप लोग इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? फिर आपके नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को उठाया जा रहा है, अगर आप इतना अग्री करते हैं मुझसे भी और सरकार से भी? मैं सिर्फ एग्री करता हूं सरकार के काम का, लेकिन जब इनपुट ये था, स्वाति जी, मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, और ये जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को थी कि दिल्ली टारगेट पे है, तो हमें पहले प्रो इंटरेक्टिव वर्क. Okay, before I take a response from Jasmine Sandhawalia, we have some breaking inputs coming in. Please stay on with us. We have breaking inputs coming in on the broadcast. A crucial CCS meeting is going to take place in the national capital. Let me go across to Pragya, who's joining us in the broadcast with more details. Pragya, we're given to understand plan of action will be discussed now in this CCS meet. Absolutely, and in fact, the leaders have started coming in. Rajnath Singh has also arrived, so has Ashwini Vaishnav. But CCS, it's a very crucial meeting, and in fact, it is the top body to discuss internal security matters of the country. And this is the first CCS post Delhi blast, Swati, and very important meeting, very crucial, significant meeting. The course of action is going to be planned in this particular CCS meeting, and this is going to be discussed. Mr. Amit Shah is also going to brief the CCS on this particular Delhi blast. There are some very crucial inputs that have come from the intelligence agencies. So in that way, in that perspective, this is happening, at 7 LKM, Prime Minister's residence. And, it holds significance because there are developments in case of Delhi blast as well. Right. Pragya, stay on with us. Let me quickly go back to our guest. Jasmine Sandhawalia, the opposition is asking, why did it happen in the first place? Well, opposition seems to be very myopic and very immature. Incidents, unfortunately, have always happened after independence. We have hostile neighbors. There is an international policy which has to be pursued. They need to understand that the terror incidents, like I've said before also, prior also, that from 7,000 they have come down to 2,212 in the last 11 years. That is curtailing down terror activity. And the Home Minister and the Prime Minister have never, ever made any compromise when it's being the sovereignty of this nation. No, but if you're saying we have hostile neighbors, that should apply to the UP era as well. We had the same hostile neighbors even when the Congress was in power. Well, what did the Congress do? When the Mumbai blast happened, the parliament was attacked. Unfortunately, we lost nearly 300
300 people. It is not, these incidents are not new. These incidents have always been happening, but the BJP-led government has tried to curtail down terror activity. Okay. We cannot be mophoic and say that no, everything is honky-dory. No, we do have enemies. Okay. Dr. Patel, And we respond to have a that. very proactive- Respond to that. We we have have a very hostile neighbors, proactive Home but the difference between the UPA era and the NDA era, the BJP government, is that this government responds. It acts swiftly. That terror attacks and terror-related incidents have reduced. See, I would like to say to that whenever any government is there, its prime responsibility is to curtail all these events. Secondly, during the time of Congress era, we have punished all the people who have been caught. I would like to say to BJP that whether you are ready to continue the Operation Sindoor, that answer is not being given because they are not ready to answer it. Secondly, if you are restricting it, but you are also promising that there will nothing such incident happen in the country, but it is happening. So why it is happening? The Chowkidar is claiming that everything is good. Why it is not good? So many questions are there and you have to answer. You are responsible. People have given the mandate to you and you are not answering to that. That is not correct. You are just comparing the data of the Congress. There are so many things to compare. I will say it to you like that. Are we going to discuss when we are going to go on war or whether we're going to go on war or not? You are responsible and answerable to everything that is happening in the country. And you want to just excuse it out by giving the data. But who's giving excuses? No, but who's giving excuses is my question. I want to go across to Akhilesh Katiyar. कौन excuses दे रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाएगा. दूसरी तरफ आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देख रहे हैं कि केवल एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है. क्या इसके नतीजों का भी एहसास है कि इससे किस तरह का माहौल देश में बन सकता है? नहीं स्वाति जी, जैसे ये बयान जो आ रहे बख्शा नहीं जाएगा, उनके साथ सख्त कार्रवाई होगी, ये होगा. अब देश ही जानना चाहता है कि भाई कार्रवाई कहते ही रहोगे या कार्रवाई भी करोगे. आज पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है. कांग्रेस की गवर्नेंस अच्छी नहीं थी तो जनता ने आपको चुना. अब तो आपकी जिम्मेदारी कब तक उस डेटा के साथ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? ये ठीक है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल ठीक है और बीजेपी को उसका जवाब देना होगा. लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या ये कार्रवाई नहीं है? क्या हमें अब भी पता नहीं है कि इसमें कौन कौन शामिल है? तो फिर ये गिरफ्तारियां किस बात की हो रही है? अभी तो गिरफ्तारियां हो रही है, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर ट्रायल होगा, कोर्ट तय करेगी. ये तो प्रोसेस है. ठीक है, सरकार गिरफ्तारियां कर रही है, सरकार को करना चाहिए. बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ आपसे कि प्रोसेस तो होने दीजिए. उससे पहले ही आप लोग इसमें कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है. सरकार को इस तरीके की घटनाओं को होने से ही रोकना चाहिए. ये सरकार की जिम्मेदारी थी जिसमें सरकार फेल हुई. अच्छा, तो फिर आप ये भी मानेंगे कि इससे पहले की जो सरकारें थी वो भी फेल होती आई? डेफिनेटली, तभी तो उनको बीजेपी को कांग्रेस को हटाया गया. जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है. आप अपनी जिम्मेदारी करिए. आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे. जैस्मिन संधावालिया. I think we are very proactively we as a political party have a very straightforward ideology for this nation, and when it comes to the sovereignty of the nation, we have never buckled down and we have called spade a spade. And today also I would again say, when they say, I'm quoting from history, if a very drastic thing, a tragic incident in Pahalgam happened, we pursued our hostile neighbor right till the end. And whenever a terror attack has happened, the government while the government will have to answer those tough questions on national security, at the moment, the politicians should refrain from making statements that can potentially vitiate the atmosphere in the country. Thank you very much, Jaimin Sandhawalia and gentlemen, for joining us on the broadcast.